myself Vishal Shankar Srivastava. Today I am going to discuss about the topic metal cutting, which is a subject of manufacturing process KMA 403 taught in second year. Metal cutting process topic cover metal cutting chip formation, single point and a multiple point cutting tool, orthogonal and oblique cutting. In this lecture we covered these topics. First we discuss about the metal cutting and machining. What is the machining? Machining is a process in which we obtain desired dimension या desired shape and size from the raw material. So it is known as a machining. Machining can be it is a casting, it is a turning operation, it is a grinding operations. आप जो भी मशीनिंग कर रहे हो, मशीन की हेल्प से मशीनिंग कर रहे हो और इंडस्ट्रीज़ में आप एक फ्रूटफुल प्रोजेक्ट बना रहे हो, दैट इज़ नोन एज अ मशीनिंग. In this machining process, we use a machine like a lathe machine, drilling machine, milling machine, and welding is also a machining process. So welding machine. Now we are going to discuss metal cutting. Metal cutting is a machining process in which desired dimensions will be obtained by removing extra unwanted material in the forms of chips. For example, we are doing a simple turning operation of this. This is a workpiece whose initial diameter is a di. We are doing a machining here. This is a tool. This is the direction of the tool. Move, the final output of the product will be like this. This is a DF final product. After machining, and the chips will be removed like this, very small and continuous both maybe. So metal cutting, in the metal cutting we obtain the desired shape and size by removing the excess material or unwanted material in the form of the chips. For example, turning process, drilling process and milling process. In this figure you can see here, this is a workpiece before machining, this is a chuck and it is a turning process. After machining, this is a machined surface. After machining, if you can see here, this is the chips. Yeah, this is the chips, and this is your cutting tool. Machining, the direction of the tool is in this direction, and machined surface will be obtained by the removing of the chips. So we can see here the unwanted material removed from the surface in the form of the chips, and desired shape means we obtain the finished surface by the help of metal cutting. Some parameters we are going to discuss, like cutting speed, feed rate and depth of cut. These three parameters are playing very important roles during the machining. In any one of parameters is not justified, then machining surface will be obtained roughed or unshaped surface. For example, if you are increase the cutting speed or feed rate, then we find out the surface final obtained is likely to be rough surface, and we are going further for the finishing, and that finishing will take the time and increase the production cost. So these parameters are very important, and before going to a study we discuss about this parameter how will affect the machined surface. In metal cutting, cutting speed is defined as the speed at which tool passes over the workpiece, and it is represented by the V. Capital V is the cutting speed. Or we can say it is the relative surface speed between the cutting tool and the workpiece. That means when workpiece rotate in this previous diagram, we can see here, rotate at which speed this workpiece, it is a cutting speed. So cutting speeds, when it rotate at the velocity V and this diameter is a D, and measure in the RPM n, it is RPM is a n, then cutting speed value will be pi d n by 60, pi d n by 60. This is multiplied by pi into d into n.
where d is the diameter of the workpiece. I am shown in the previous diagram, this is the diameter of the, and n is the RPM rotation by the workpiece, pi dn by the 60 into 1000, and its unit is mm per minute. Okay. Feed rate basically defined as the movement of the tool in one rotation of the workpiece, or distance traveled by the during the tool in one revolution of the workpiece. For example, this is a workpiece and this is your tool. Tool rotate n RPM, sorry, workpiece rotate in the n RPM, and the tool rotate move in this direction. In 1 RPM, the tool move distance, say distance x. So, feed is known as a x magnitude of the tool. We can also see here for example, we can see in this diagram, during n RPM, tool move in this direction, say x, unit is mm. So, feed rate will be x mm. Is it clear? So, it is a x mm of the feed. Feed always given to the along the surface of the workpiece, and depth of cut is measured in terms of thickness of the chip removal. It is calculated by the d minus a small d by 2. D minus a small d means d is a initial diameter, or small d is a final diameter. So, after machining, we obtain a new surface, that diameter will be reduced by maybe delta terms of the thickness. So, that is the thickness obtained by the differentiate between initial minus final divided by 2. So, its unit is a mm. So, depth of cut can be find out d minus small d by 2 into mm. Okay. Now, here discuss mechanics of metal cutting. Mechanics of metal cutting included various types of angles, forces during the mechanics formations. Mechanics formation is not an easy task. It is not a simple phenomena by which we obtain the chips. When we apply the cutting force, you can say generally when we apply the pressure by the help of the tool on the workpiece. For example, you can assume that this is a workpiece and this is our tool. If tool make contact with this workpiece, then certainly it apply the pressure at the point of contact, or you can say at the tip of the tool. So, that create a compression. It is a tool and this is our workpiece. This is the tip of the tool. Here we apply the pressure in the form of the force, that is known as a cutting force. Cutting force apply here. A compression will be created and a shear zone will be formed, and that shear zone will be formed because there is a shear forces are developed. Shear force developed along this surface. This is known as a shear plane. Okay. The shear plane deformed and remove the material in the form of the chips. This is the mechanics of the metal cutting. In one line we can say when we apply the cutting force, there is a shear deformation will be developed, and that deformation will take place in the form of the chips. This is the mechanics of the metal cutting. The shear zone is, that is a shear zone, is a very narrow zone,
this is the value is a 0.025 mm, and the metal removal take place from this area along this surface of the tool. Okay. Tool remove, sorry, work chips remove along the surface, that is a known as a rake surface. For example, जैसे कि आपको यहाँ दिखाता हूँ एक छोटा सा डायग्राम बना के. This is a tool and this is a removal of the chips. That is a known as a rake surface. Rake surface will be changed if cutting edge will be changed. अगर हम कटिंग इस सरफेस से न करके इधर से कह रहे हैं तो जो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन चेंज हो गई एंड दैट इज अ नोन एज अ रेक सरफेस एट दैट टाइम. अगर आप कटिंग टूल को पोजीशंस को चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दिस इज अ कटिंग टूल, this is a cutting tool, you are machining this by this side, rake tools move from this side, so it is known as a rake surface. If we are doing from this side machining and tool rake chips move from this side, this surface along the upward direction, so it is known as a rake surface. So generally मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप टूल को कटिंग एज बदल दोगे, चेंज कर दोगे, तो रेक सरफेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जिसके अलॉन्ग चिप्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके बाहर निकलेगा, दैट इज अ नोन एज अ रेक सरफेस. एंड इफ यू आर ड्रॉन अ नॉर्मल इन दिस, you can see here this is a normal. This is known as a rake angle. If you are doing the drawn on the normal, this angle will be known as a rake angle and denoted by the alpha. Again I am repeated, this is your rake surface of the tool, and if you are draw the normal on the rake surface, the angle formed between the normal and rake surface is known as a rake angle. This is alpha. It may be positive or negative. It may be positive or negative. That is, this side will be alpha positive and this side will be alpha negative. So, alpha positive and negative play important role during the machining in the terms of when we decide it is a hard workpiece or soft workpiece. If you are consider alpha is negative, that means we are doing the machining of the hard workpiece and tool wear take place and the life of the tool become less. आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा जैसे ये वर्क पीस है, ये हमारा टूल है, तो निगेटिव की तरफ आप जैसे जाओगे तो टूल के टिप पे प्रेशर बढ़ेगा. यू कैन सी हियर दैट टिप पे प्रेशर increases and the wearing occurs at the tip of the tool and required negative angle at the vein hardness required, the material of the hardness is more and more cutting force is required. So, negative rake angle will be required at that time. तो हमें नेगेटिव कब का चाहिए कि जब वर्क पीस हमारा हार्ड हो और हमारा मतलब हमें हार्ड वर्क पीस की मशीनिंग करनी हो, जहाँ हमें कटिंग फोर्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो. सो हमें नेगेटिव रेक एंगल चाहिए. आप ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे जब टूल मूव करेगा तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो मतलब टिप्स पे टिप परपेंडिकुलर हो रहा है तो टिप पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है. सो तो अल्फा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डिसाइडेड ऑन द फैक्टर ऑफ द वर्क पीस मटेरियल एंड अमाउंट ऑफ द कटिंग फोर्स. ठीक है. द सरफेस ऑफ द टूल which not make contact with the work piece, this surface, and this is known as a flank या relief surface. And this is known as a relief angle. This is known as a relief angle. We can define here. Other surface of the tool which is nearer to the machined surface is known as the flank surface and it never become the zero. वो क्यों जीरो नहीं होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि if you are doing this angle will be tends to zero, that means कि this surface make contact with the workpiece. You can see here
if this is relief या flank surface, relief या flank surface. Here you can see here gamma is equal to 0. आपको दिख रहा होगा कि गामा की वैल्यू जो है 0 हो चुकी है, ठीक है. तो दैट मीन्स कि ये जब मशीन करते हुए ये टूल की डायरेक्शंस यही है, कटिंग टूल इसी डायरेक्शंस में मूव करेगा कट अपनी वेलोसिटी से. तो ये मशीन्ड सरफेस को रब करते हुए जाएगा, मशीन्ड सरफेस को रब करते हुए जाएगा, तो जो भी मशीन्ड सरफेस की फिनिशिंग होगी वो खराब हो जाएगी. सो इट विल बी नेवर 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव इसकी वैल्यू होगी. किसकी? रिलीफ एंगल के. कमा एन एंगल बिटवीन द शीयर जोन एंड machined line is known as a shear angle. This is a shear angle. इसको भी मैं इंडिविजुअली ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज नोन एज अ, ये आपका हो गया एंगल शेयर, shear angle between shear plane and machined surface horizontal line. ये horizontal axis and machine shear plane के along जो एंगल बनता है वो shear angle होता है. There will be a relation between shear angle and thickness of the chip and rake angle. Tan phi is equal to r cos alpha upon 1 minus r sin alpha, where r is the chip thickness ratio. Chip thickness ratio means this is a cut after machining, जो चिप हमारी रिमूव कर रही है उसकी थिकनेस TC, और ये अनकट है, दिस इज अ अनकट. जनरली ये T और TC की वैल्यू लोग एज्यूम कर लेते कि ये इक्वल है, बट ऐसा नहीं होता है. T और TC इक्वल नहीं हो सकता है. TC इज ऑलवेज ग्रेटर देन T, बिकॉज आप कहोगे कि सर यही तो थिकनेस बाहर जा रही है, रिमूविंग जो चिप्स है सेम थिकनेस, जितना हमने टूल को डेप्थ दिया, डेप्थ ऑफ कट उतनी बाहर ही गई. सो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इसकी यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हीट क्रिएट कर रहा है, तो वो थर्मल एक्सपेंशन कर रहा है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसमें एक्सपेंशन हो जा रहा है. सो इसकी थिकनेस हमेशा इसकी थिकनेस से ज़्यादा होगी. सो TC इज ऑलवेज ग्रेटर देन T. T is uncut and TC is a cut thickness of the chip. एंड ये फॉर्मूला हमने आपको बताया जो shear एंगल और rake एंगल और chip thickness रेशियो के बीच में रिलेशन है. tan phi is equal to r cos alpha upon 1 minus r sin alpha. Okay. Now cutting tool. Cutting tool is a device या machine which is used for metal cutting during the machining process. फॉर एग्जाम्पल आप लोग डेली घरों में यूज़ करते हैं चाकू को, नाइफ को, तो नाइफ इज ऑल्सो एज अ टाइप ऑफ कटिंग टूल. दैट कट द प्लास्टिक, दैट कट द वेजिटेबल्स, सम टाइम यू कैन यूज टू कट द वुड भी. सो कटिंग टूल आपका एक डिवाइस है जो मशीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेटल कटिंग में हमें रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और कटिंग टूल की एक प्रॉपर्टी, जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो मशीन जिसकी मशीनिंग करनी होगी, जिस वर्क पीस पे हमें मशीनिंग करनी होगी, उससे उसकी हार्डनेस हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए. अदरवाइज दैट नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन, मेटल कटिंग ऑपरेशन वो परफॉर्म नहीं करेगा. ऑब्वियसली बात है कि अगर ये टूल से अगर हम किसी मेटल को कट करना चाहेंगे प्लास्टिक के टूल से, तो वो उसमें तुरंत वेयरिंग आ जाएगा, वो टूल के नोजेस जो है, कटिंग एज हो, तुरंत ब्लेंडेड हो जाएंगे और ख़राब हो जाएगा. सो हमेशा अगर टूल हमारा से किसी टूल की हार्डनेस अगर से 65 है, फॉर एग्जांपल BHN, सॉरी, किसी टूल की हार्ड, मान लो कि SS की टूल है, तो ये टाइटेनियम के लिए सूटेबल नहीं होगा. टाइटेनियम के लिए मशीनिंग के लिए आप कहोगे कि सर बट हम करते तो हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत मशीनिंग के लिए ठीक है, बट ये इसमें वेयरिंग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा. अगर यही SS स्टेनलेस स्टील से अगर हम स्टील की करेंगे या एल्युमिनियम की मटेरियल की करेंगे तो मशीनिंग ये बहुत
स्मूथली करेगा और सरफेस फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और टूल वियरिंग भी कम होगा, हमारा टूल लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो कटिंग टूल जब भी सिलेक्शन करना होता है तो हमें उसकी मटेरियल देखनी होती है कि किस मटेरियल का बना, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्या सा मशीनिंग का ऑपरेशन करना होता है, और मशीन जिस वर्क पीस का मशीनिंग करना है वो मटेरियल कैसा है, उसके बिहाफ पे हम कटिंग टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। कटिंग टूल्स को 3 टाइप्स से डिवाइड किया गया है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, double point cutting tool and multiple point cutting tool. Basically here we discuss only single point cutting tool and multiple point cutting tool. It is classified on the basis of their cutting edge. Cutting edge means the edges which are responsible for the cutting the metal या material, that is known as the cutting edge. For example, this is workpiece and this is a tool. This is known as a cutting edge. So this is a cutting edge which is responsible for the cutting. If you are using as a pinpoint, like like this, then this is a cutting tool, cutting edge. So जो भी कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेटल रिमूवल के लिए, आइदर फॉर वुड आइदर फॉर मेटल या प्लास्टिक, वही हमारा कटिंग एज कहलाता है. In single point cutting tool, you can see here this is a single point cutting tool using in the lathe machine turning operations. In single point cutting tool there will be one cutting edge responsible for the machining operations. Okay, you can see here there is a more than one cutting edge, but only one cutting edge will be responsible for the machining operation. So it is a called single point cutting tool. In multiple point cutting tool, here you can see here this image, this is a drilling tool, this is an hexa handsaw. You can see here there is a more than one cutting edges, 1, 2, 3 and one is a hidden, you can see here 4, 1, 2, 3 and this is a fourth cutting edge. So here more than one cutting edge. So it is known as a multiple point cutting and they all are participated during the machining. They all are participated. आप ड्रिलिंग जब भी करते हो तो देखते हो पूरा टूल को फीड हम देते हैं और टूल के चारों जितने भी कटिंग एजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कटिंग के लिए. हियर यू कैन से अदर हैंडसा, they are more than one cutting edge. You can look here, more than one cutting edge. So and they all are performed during the machining operation. So it is known as multiple point cutting tool. There is a difference between single point cutting tool and multiple point cutting. We can observe during the single point cutting operation, for the seam operation, you can see here कि one cutting edge passes from the same path multi times, but in multiple point cutting edges, cutting teeth जो the cutting edges passes at a time one, but here you can say जैसे this is a workpiece, single point cutting tool used to cut the workpiece from here, making a parting here. ठीक, तो one cutting edge passing during 1 minute operations, for example say 10 times ये move कर रहा है, but it is 10 टाइम्स मूव पास कर रहा है वहाँ से यहाँ तक जा रहा है. बट मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल के टाइम पे क्या होगा कि मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल में एक कटिंग एज का दोबारा नंबर आने में हो सकता है कि वो 30 सेकेंड हो जाए या 10 सेकेंड हो.
तो 10 सेकेंड बाद या 1.5 मिनट मतलब उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, एक कटिंग एज जो है वो लॉन्ग टर्म पे आएगा, थोड़ी देर ज़्यादा पे आएगा, तो वो उसका जो रिपीटेशन बार बार नहीं होगा एट द सेम टाइम इंटरवल पे, बट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कटिंग एज का रिपीटेशन बार बार होता है। तो जब कंटिन्यूअस कांटेक्ट बनता है और बार बार रिपीटेशन होता है तो फ्रिक्शन होगा और वहाँ पे हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, जिससे पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की वियरिंग बहुत तेजी से होगी, टूल लाइफ डिक्रीज कर जाएगी। और मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल में क्या होगा कि टूल वियरिंग कम होगा और टूल लाइफ ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डिजाइनिंग एंड टूल ज्योमेट्री जो है टफ होती है एज कंपेयर टू मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। Elements of single point cutting tool, this is a single point cutting tool and we are going to discuss its elements, that is a parts. Basically हम बात करें तो parts की बात करेंगे. This is a shank and main of body of the tool which is hold in the workpiece. ये वर्क कटिंग टूल होल्डर्स में होल्ड होता है जिससे हम ड्यूरिंग द मशीनिंग, जब हम मशीनिंग करते हैं तो इस पार्ट्स का कोई रोल मशीनिंग में नहीं होता है, ये दैट इज नॉट प्ले रोल ड्यूरिंग द मशीनिंग, दिस पार्ट इट इज ओनली होल्डिंग के लिए बस यूज होता है। दिस इज अ फेस ड्यूरिंग दिस साइड चिप्स मूव अपवर्ड डायरेक्शंस, ये फेस है, ये नोज है, नोज प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर नोज की शार्पनेस, अगर रेडियस, जिसे रेडियस के टर्म्स में मेजर करते हैं, यू कैन सी हियर दिस इज अ कर्वेचर पाथ। अगर रेडियस कम है तो अच्छी बात है, शॉर्प कॉर्नर मिलेगा, मशीनिंग में बहुत अच्छी स्मूथ सरफेस देगा। बट अगर रेडियस इसकी बढ़ती जाएगी, नोज रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएगा, यू कैन सी हियर दिस इज अ फॉर्म लाइक अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर, ये रेडियस। तो ये अभी आगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द टूल। फेस, रेक फेस जिसे कहते हैं, टॉप सरफेस ऑफ द टूल along which chips move in upward direction, this is a face, यहाँ से चिप्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, दिस इज नोन एज अ रेक फेस। फ्लैंक, ये कटिंग फेस है जिसे फ्लैंक आप कहते हैं, ये और ये जिस साइड से जैसे आप कटिंग करोगे उस हिसाब से फ्लैंक चेंज हो जाता है। ठीक है, एक को माइनर कहते हैं, एक को मेजर कहते हैं। ये फ्लैंक जो होता है, जो आप रिलीफ सरफेस की बात कर रहे थे, वो वही फ्लैंक का पार्ट्स है जो कि टूल के लोअर पार्ट्स में होता है और साइड्स में ये वर्कपीस मशीन सरफेस के ऊपर वाला पार्ट्स रहता है। नोज मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, ये कटिंग पॉइंट का एक कॉर्नर शेप टूल है जो कि मशीनिंग में कटिंग एज के पार्ट्स रहता है और मशीनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नोज रेडियस ज़्यादा हो गया तो फिर ये रफ मशीनिंग सरफेस ख़राब मिलेगी आपको, रफनेस ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग में हम बात करेंगे। दिस इज अ वर्क पीस, व्हेन टूल मेक कॉन्टेक्ट, कटिंग टूल मेक कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस सरफेस इज 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का है, दिस इज अ नोन एज अ ऑर्थोगोनल कटिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज अ 2 डायमेंशनल कटिंग, इसको 2 डायमेंशनल कटिंग करते हैं और मोस्टली जो यूज़ होता है हमारे यहाँ यही होता है। इसी पे हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग पे। जो आपके जितने भी एनालिसिस होते हैं मोस्टली ऑर्थोगोनल कटिंग पे ही बात होती है। पार्टिंग ऑपरेशन इन लेथ एंड स्ट्रेट मिलिंग ऑपरेशन इज नोन एज ऑर्थोगोनल कटिंग। व्हेन एंगल वेरिएशन अदर देन 90 डिग्री, वो कुछ भी हो, 90 डिग्री का मतलब 45 डिग्री भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 95 भी हो, 100 भी हो सकता है। अदर देन 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में ये जो एंगल है वो 90 नहीं होनी चाहिए। किसके बीच में? जो हमारा मशीन वर्क पीस है और ये हमारा कटिंग टूल है, इनके बीच का जो एंगल, तो ये हमारा कहलाता है ऑब्लिक कटिंग। तो ऑब्लिक कटिंग में जो होती है एंगल बिटवीन कटिंग एजेस of the tool and the machine workpiece surface is other than 90 degree. It is, इसको हम 3D dimension 3D cutting भी कहते हैं। Turning operation and milling operation is known as a oblique cutting operations. That's all about oblique cutting and orthogonal cutting, and this is a reference of my diagrams and points where we have discussed. Thank you.